उस वक्त शिनचैन आया था. I was not really fan. My brother was a fan of. I was like ये क्या है? ए ना ऐसा ना करो. वो ऐसी मेरे को इरिटेट करता रहता मेरा भाई मुझसे. सब कैडबरी का होता था. दुनिया डेयरी मिल्क बन जाए रे. I remember this. डेयरी मिल्क का पंछी, डेयरी मिल्क का पेट. डेयरी मिल्क का पोस्टमैन आया, चिट्ठियाँ लाया. उसने पूछा कौन है तू? I remember every frame of this. You know when the 7th book came in, मैंने cheating कर ली थी. मेरे को देखना था how it ends. So you read the end first? I read the last line. And you know what's the last line of the whole like series? चीटर चीटर चीटर. मैंने उनसे पूछा कौन प्ले कर रहा है ये पार्ट. द डोर ओपन्स एंड मैम एंटर्स एंड शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ. हाय, आई एम मृणाल. एंड आई से हाय, आई एम मृणाल. I said Sonpari and she played my mom. Max made F1 boring for me because he's always winning. That's also pressure, you know. Yeah. Like, you know, when you're winning, कोई याद नहीं रखेगा, but you lose once and people will always remember that. Yeah. But in my head, I was like, lose. Hey, what's up? Welcome to another episode of Audible presents The Longest Interview. आज की मेरी conversation है with Mrunal Thakur, who is a fabulous actor and मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है. क्या मस्त vibe थी यार episode की, like बहुत ही chill episode and I hope you guys like it. By the way, the audio version of all these episodes will be out on Audible very soon. So let's jump right inside the conversation I had with Mrunal Thakur. Hi Mrunal, how are you? Hi, I'm good. आप कैसे हैं? बस बढ़िया. Welcome to चलचित्र Talks. Thank you. And I'm so happy you are here. मैं आज आपसे बहुत सारी recommendations लेने वाला हूँ. Our channel is all about recommendations and things you are passionate about. जी. But हम थोड़े ना टेढ़ा start करते हैं, है ना? I love that. हाँ. मेरे को आप ये बताओ, which is your first film watching memory? Oh wow. When I was growing up, हम लोग सह्याद्री वाहिनी देखते थे, which is a Marathi channel. और so पहले DD1 आता था और I think 2-2:30 बजे के बाद it used to switch to सह्याद्री वाहिनी. और Saturday Sunday वो the only days जहाँ पर दोपहर में 4 बजे पिक्चर लगती थी, मराठी फिल्म्स. बहुत सारे फिल्में लगती थी. महेश कोठारी सर की, अशोक सराफ सर की, और लक्ष्मीकांत बेर्डे, दिलीप प्रभाकर, अलका कुबल. और आई कांट टेल यू यार, बाकायदा लास्ट वीक आई हैड एन अवार्ड सेरेमनी जहाँ पे हम लोग अटेंड कर रहे थे एंड आई मेट अलका जी एंड आई कांट टेल यू एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर और मुझे लगा कि आज like the moment, the reason why I'm here today is because of this lady, because of this woman. वो एक एक्टिंग का जो सीड होता है ना, उन्होंने प्लांट करा था मेरे अंदर, जो आज इतना you know it's grown inside me. तो अर्ली फिल्म की मैं वन फिल्म विच आई रिमेंबर वाज झपाट लेला, क्योंकि और वो फिल्म देखने के बाद I started watching more films. और झपाट लेला is a Marathi movie by Mahesh Kothari sir, and in that there is Dilip Prabhakar sir as well, जहाँ पे he plays Tatya Vinsu. So it's like a doll who gets possessed. Wow. So and then that dialogue from that film was Om Bhat Swaha. So school में हम लोग सबको डराते थे, Om Bhat Swaha, you know. So that's how it began. And every Saturday Sunday हम लोग बैठते थे. एक आंटी आती थी who used to, I think that time we were posted, my dad was posted in जलगांव, जो कि भुसावल के पास है. ज़्यादा लोग शायद जानते नहीं जानते, मुझे पता नहीं, बट जहाँ पे वो you know एक टोकरी में वो सारी चीज़ें, शेंगदाने, peanuts and all of that she used to bring, and we used to buy that like our snack, like popcorn or something like that. In Marathi we say it शेंगदाणे आणि फुटाणे, you know, and we used to eat that. So that was our picnic. That was the best time because पूरे हफ्ते हमें फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता था. Right. बस Saturday Sunday 4 से 7. Right.
एंड डू यू ऑल्सो हैव अ थिएटर की कोई मेमोरी? क्योंकि मेरे को लग रहा है चैनल बेस्ड मेमोरीज या टीवी में। यार हमको ना उतना अलाउड था नहीं पिक्चर देखना थिएटर में, लेकिन जो सबसे पहली फिल्म मैंने देखी थी विथ फैमिली वाज बॉर्डर। और स्कूल में हम लोग ने छोटा चैतन देखी थी, चश्मे वगैरह पहन के। आई थिंक बॉर्डर वाज द टाइम वेयर माय मॉम वाजंट फीलिंग टू वेल, सो माय डैड टुक अस, हम लोग को लेकर गए, चलो आज तुम्हें पिक्चर दिखाते हैं। सो एंड इट वाज अ नाइस, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे यार। या मेरी ऐसे बचपन की एक मेमोरी है, लाइक फर्स्ट इज डेफिनेटली द फिल्म दैट आई वॉच इन थिएटर्स, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, या उसकी है। बट आई रिमेंबर मैं एक बार कभी खुशी कभी गम देखने गया था एंड मैं सेकंड हाफ में सो गया था, और शायद सेकंड हाफ में एक थप्पड़ पड़ता है एंड देन उसी से आप उठे। सो आई जस्ट रिमेंबर दैट स्लैप। या सो ऐसी बहुत सारी वियर्ड बट यू नो आई विल टेल यू, मेरे पापा की पोस्टिंग होती रहती थी, सो हम लोग जलगांव से वी वर कमिंग टू श्री रामपुर विच इज़ इन अहमदनगर। तो और बहुत शिफ्टिंग होती थी, मतलब हर 3 साल में, कभी कभी 11 महीनों में। तो सीन ऐसा था कि पहले सामान पहले चला जाएगा ट्रक से और हम लोग ट्रेन से बाद में आएंगे। बट वी लैंडेड बिफोर द सामान केम, तो हम लोग क्या करें, हम लोग थिएटर चले गए। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, मेरी बहन 9th में थी। माई कज़िन वॉज ओवर, माई मॉम वॉज प्रेगनेंट ड्यूरिंग माई ब्रदर, और फिर हम देखने गए लक्ष्य। एंड देन जो मेरी फिल्मोग्राफी है वो शुरू हुई ऋतिक रोशन जो कि उस फिल्म में थे। उस फिल्म के डायरेक्टर वाज फरहान अख्तर, एंड देन आई डिड अ फिल्म विद फरहान। सो वो ऐसे कुछ आई फेल्ट लाइक मैं उस वक्त से मैनिफेस्ट करती रही, और वो आज वो चीज़ पूरी हो रही। सो इट फील्स सो गुड टू बी वर्किंग विद द पीपल आई रियली एडमायर्ड, द एक्टर्स आई रियली एडमायर्ड। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, याद है? अब है, वो है मेरा लक्ष्य। And Lakshya is a film that I really... अरे वो तो मतलब it changed everything कि कुछ करना है, you know, सब हम कुछ कर सकते हैं। The songs are really nice, and I think after प्रीति मैम्स character is what the journalism का जो कीड़ा होता है ना कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, that's why I took BMM by the way. You know, लक्ष्य का फर्स्ट हाफ हैज बीन रियली इम्पैक्टफुल फॉर मी कि क्या करने वाले हो, क्या प्लान है, करना क्या है। मैं अभी घर जा रहा हूँ, नहीं ना, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जिंदगी। यू मीन लाइफ लाइन से रटे हुए उसके डायलॉग। आज संडे है, मैं संडे को ऑफिस नहीं जाता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सर? Too much impact like that film had on and me. the song and the dance अगर मैं कहूँ, and then जो rock climbing पे जो ten है, oh god, and then they used it in Rock On. Oh. Yeah. Can you believe it? But that film is it's going to be very very special. Yeah, मैं यहाँ ऑडियंस से एक चीज बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी पता है तो बताना। जब the reveal shot of ऋतिक in that film, जब वो रेड कलर की मर्सिडीज चला रहे होते हैं इंडिया गेट के सामने से, ये शॉट है शायद, I don't remember, तो एक गाना बज रहा होता है उसमें, ऐसे करके एक गाना है उसमें, रैप सॉन्ग है, लेकिन आज तक नहीं मिला मेरे को। सब शज़ाम शज़ूम सब कर लिया मैंने, कहाँ मिलेगा? हाँ, लेकिन you know ऐसे बहुत सारे गाने जो मिलते नहीं है। yeah. You know, in fact, मैं अपनी बहन से एक सॉन्ग पूछ रही थी जो मैंने 7-8 साल पहले सुना था, और उसकी बीट ऐसी थी, I'm so bad, I'm not going to do that, but और मैं उसको सुनाती थी, लोचन ये गाना कौन सा है? She said, मुझे नहीं समझ में आ रही तो क्या गा रही, but I did find that song. और 7-8 साल बाद I found that song. It's a Tamil song. Nice. और जो खुशी हुई ना जब वो मुझे कहीं YouTube पे मिला, I couldn't find it on Shazam, Spotify, Apple Music, कहीं पे नहीं मिला। पर वो जो खुशी होती है ना when you find that, so we should ask the audience. Yes, and in fact रंग दे बसंती में the opening credits जो है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा उसका opening credits का score पसंद था, and I was doing an episode with विजय नाम्बिया सर, और मैंने उनको बोला, हम A.R. रहमान सर की बात कर रहे थे, and he's like, you know, I'll get a refined version for you because I know it.
वो मतलब उन्होंने बोला हुआ है देंगे, आई ट्रस्ट हिम एंड ही इज लाइक कि मिल जाएगा तुम्हें, बट लाइक यूट्यूब पे भी पड़ा है अगर आप ओपनिंग क्रेडिट्स रंग दे वसंत, बहुत बट उस प्यारा वक्त नहीं, अब खैर जब हाय नाना भी रिलीज़ हुई तो वी रिक्वेस्टेड शौर्य सर हमारे डायरेक्टर जो है और हिशाम जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, हमने कहा यू हैव टू रिलीज ऑल द बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि गाने तो है ही जो हमारे दिलों को छू जाते हैं, लेकिन इट्स दैट BGM दैट ऑल्सो एलिवेट्स द परफॉर्मेंसेज, द कैरेक्टर्स एंड that journey. That's why you feel so connected with the characters. तो I'm so happy कि फिल्म के रिलीज होने के 1 महीने बाद उन्होंने वो BGM फुल स्कोर एल्बम पूरा रिलीज किया. हमारे जैसे एक नीश है जो वो ढूंढ रही होती है कि यार वो 20 मिनट पे क्या बजा था वगैरह, they feel really perfect. इनफैक्ट काफी डिमांड के बाद I don't know if you remember ABCD में सुन साथिया Mahiya. Yes. That was just little bit like 4-5 lines, and then in the second part they made a proper song. Yeah. Barsat ishq. वो that one. अच्छा तो गाते हो आप. एंड मेरे को अभी रियलाइज हुआ मेरी साइड ऐसे कॉफी भी पड़ी है, पानी भी पड़ी है, आई थिंक यू शुड हैव वाटर. नहीं आई एम फाइन एज लॉन्ग एज मेरी आपसे बातचीत हो रही है, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट. एंड आगे मूव ऑन करते हैं कि फर्स्ट मेमोरी आपने बताई, बट लाइक ऐसे कि मैं बोलूँ कि मृणाल को कौन सी कुछ पिक्चरें हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, यार ये 5-7 पिक्चरें हैं जो मेरे से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, दे डिफाइन मी. या दे डिफाइन मी. फर्स्ट फिल्म जो है विच ट्रूली डिफाइंस मी इज जब वी मेट. क्योंकि आई थिंक हम उस फेज में होते हैं जहाँ पे वी आवरसेल्व्स डोंट नो हु वी आर, और फिर पानी का काम पानी करने वाला, पानी का काम पानी करता है. वैसे ही जब भी मेट का काम जब भी मेट की गीत ही कर सकती थी मेरे लिए. बट हैविंग सेड दैट, जब इम्तियाज़, आई एम अ बिग फैन ऑफ इम्तियाज़ सर, और जब भी मेट आई, जब हमने गीत, द कैरेक्टर ग्राफ एंड द वे शी इज़, आई फेल्ट सो कनेक्टेड विद हर. और उसमें वो एक चीज़ कहती है जब वो घर छोड़ के जा रही होती कि फ़र्क पड़ना है, तू भी चल मेरे साथ. उस सीन के वक्त वो कहती है कि वॉट एवर इट इज़ यार, कल को यू नो व्हेन आई हैव डिसाइडेड दिस, टुमारो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन फॉर माय डिसीजन. अच्छा हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो ठीक है. सो दैट थिंग स्टेड इन माई माइंड. तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ, और जो हो ना हो खुद की फेवरेट तो ज़रूर होने. आई मीन वी ऑल शुड बी आवर फेवरेट, बिकॉज देयर विल बी डेज जहाँ पे कोई नहीं रहेंगे हमें सपोर्ट करने के लिए. सो हाउ डू यू मूव ऑन? ठीक है, यू हैव टू बी जस्ट बी काइंड, जेंटल, लाइक यू हैव टू बी जेंटल ऑन योर सेल्फ. लाइक इफ़ यू आस्क मी 10 साल पहले अगर मैं अपने आप को अगर एक मैसेज देती तो इट वुड बी दिस ओनली, टू बी kinder to yourself. Kind, don't be so harsh on yourself, because I used to beat myself up कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, you know that. So जब we met is one of the films. I feel truly strongly I resonate with it. Shara, then all the romantic movies, क्योंकि I think आधे से ज़्यादा लोग यहाँ बैठे मस्ट बी फीलिंग रोमांटिक, बट वो दिखाते नहीं है. बट आई थिंक टुडे ऑल्सो इफ़ यू सी देयर नॉट मैनी रोमांटिक मूवीज बीन मेड. और मैं तो वीर ज़ारा देख के, हम वीर ज़ारा शाहरुख सर की सारी फिल्में देख कर बड़े हुए हैं, एंड फॉर अस दैट्स लाइक बाइबल. मेरे लिए तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रोमांस. लोग कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती, तो हमें भी अपनी मोहब्बत में और कुछ दिखाई ही नहीं दिया. एंड फॉर मी वीर ज़ारा इज वो मेरी डिफाइनिंग लिस्ट में है. करेक्ट. इट शेप्ड मी. या सो आई कैन बी ज़ारा, आई कैन वेट फॉर समवन फॉर लाइक ऑल माई लाइफ टाइम, इफ दैट पर्सन वांट्स loves me back, of course. The kind of films I'm doing also, I'm not it's not coming from a place where I'm full of myself or something like that, but जो फिल्में मैं करती भी हूँ शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ देखती हूँ, रेजोनेट करती हूँ, इसीलिए मैं वो करती हूँ. एक फिल्म है जो पूजा मेरी जान, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, उसको वक्त लगेगा, पर आई जस्ट फेल्ट लाइक माई गॉड, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू, दिस इज़ हु आई एम, एंड दिस इज़ वॉट हैड हैपेंड टू मी. सो
झगड़ा किया मैंने प्रोड्यूसर से क्योंकि कोई और कर रहा था, और जब मुझे पता चली कि ये फिल्म बन रही है और ऐसा ऐसा किरदार है, आई फॉट फॉर दैट रोल कि मैं ऑडिशन दूंगी, मैं टेस्ट दूंगी, मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगी, आपको रीडिंग करना है, जो करना है कर लो, प्लीज प्लीज मेरे को दे दो ये रोल. आई हैड टू लिटरली. एंड व्हेन विल इट बी आउट? Hopefully this year. Very nice. We shot last year. Yeah. I remember Sita Ramam का last day था और next day मुझे flight लेके screen test के लिए जाना था. Yeah. Somebody's like, why do you have to give screen test? I said, hold on, that's my concern. I need to do this film, Nice. so I have to give. And why not, yaar? I mean. Yeah. But yeah, I can't wait for you to watch that. Lovely. मेरे को एक कोई existing project बताइए जो आपका indie project you did which is very close to your heart and you are like, I wish more people talked about it. Love Sonia? Dude. मेरी अपनी या in general? नहीं आपकी. Can I say something? जी. Love Sonia से related. A lot of my life has been shaped by Mark Duplass. Wow! उनका एक साउथ बाय साउथ वेस्ट की एक स्पीच है ऑन फिल्म मेकिंग कि इफ यू आर एन इंडी फिल्म मेकर you have something unique to offer, and it usually lies in those weird conversations you are having with your friends, your loved ones, your siblings, between like midnight and 3 in the morning when everybody's loopy and or drunk or stoned. आप प्लीज मुझे भेजिएगा वो. होली शिट मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ एंड उन्होंने क्रैक कर लिया है इंडी फिल्म्स राइट एंड देन व्हेन आई सॉ डूड यू आर शेयरिंग स्क्रीन विद मार्क डुप्लेस आई लाइक आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट मार्क. ओ माय गॉड, इज सच अ फैंटास्टिक ह्यूमन. बट यू नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. मैं इतना खो गई थी उस वक्त कैरेक्टर में. हैव टू यू नो बी इन द फेज, बी इन दैट जर्नी, बी इन दैट सिचुएशन. और इफ़ यू हैव सीन द फिल्म में देर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं आती एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद अ फॉरेनर एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद हिम एंड ही इज़ मार्क ड्यूप्लस एंड आई वाज टोल्ड दैट आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको LA में होकर भी अंग्रेज़ी बोलना ही नहीं है. सो दैट वाज माई डे कि मुझे अमेरिका में होके सिर्फ हिंदी, आई हैव टू स्टिक टू हिंदी. फिर I couldn't have a conversation with him. Only when I realized that, you know what, that's when I discovered he was actually shooting for Wild Wild Country. He's the executive producer. Yes. Yeah. So जो information जो I just overheard, and I think he's also got a daughter and he loves his daughter. And जब Love Sonia की story भी उनको पता चली कि exactly what is the journey of Sonia, तो he felt really bad and he's like, Tabrez, who's our director, said, I can't even believe that humans do this. And he was just so happy to be a small part of this film. And I'm so happy that I got to interact with him jitna little bit I could. But I still regret, I wish I was not so focused sometimes. You know, sometimes over-focusing is also not good. Bro, I have to tell you this. So because my brother, my friends also know how much I have been influenced with this philosophy. तो एक वेबसाइट है कॉल्ड cameo.com जहाँ पे बाहर के लाइक यू कैन गेट सक्सेशन के लोगन रॉय टू से ऑफ टू यू यू पे फॉर इट एंड ही विल से ऑफ एंड लाइक दे विल गिव यू मैसेजेस. दिस इज न्यू, आई एम हैप्पी टू नो दिस. या सो हर जना की लाइक सो माय ब्रदर गिफ्टेड मी अ कैमियो का वीडियो लाइक ही पेड लाइक आप जाके कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिग एक्टर्स एंड सेलेब्स. ओके. So they are like, do you want a message from this person? Okay. I got a message from Mark Duplass, a video on my birthday. Saying? Hey Vaibhav, your brother told me you are into filmmaking. See, I have some advice for you. It's a 10-minute video of Mark Duplass talking to me about how to crack it in the film industry. Wow. So मैंने जब आपको देखा उसमें like I'm like holy shit, I have to mention it to you. He's a sweetheart. And आप ना Love Sonia में if I may, it's a compliment only, you were looking like गुलशिफ्त हरानी. मैं भी मेरे फ्रेंड को भी मैंने बोला था कि यार ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है and I really admire her also. So यार वो फिल्म बस I wish कि वैसी और हो. Yeah. क्योंकि उसमें कोई एक्ट्रेस या कोई लीड एक्ट ऐसा कुछ नहीं था. आई वाज जस्ट सोनिया प्लेइंग द कैरेक्टर. या I'm glad we talked about like Love Sonia also. And मैं और फिल्मों की बातें करना चाहता हूँ. अभी recently a film that you watched which blew you away, like इंडिया में बात करते हैं पहले.
See, I'm more connected to the Marathi cinema. Baipand Bhari Deva, I don't know if you've seen that movie. It's a story of sisters, 5 sisters, and how they have their journey and ups and downs, and eventually वो कैसे आके मिलते हैं. It's a fun one, बहुत हंसाता है. It's a simple story, but जो climax है वो रुला देता है. Like, it's the kind of film which has had that impact on my friends and family, जहाँ पे भले वो अपने दोस्त, अपने बहनों से या भाइयों से या सिबलिंग से बात नहीं कर रहे हो, they have picked up the call. I mean, I think that is the power of cinema. अगर आप के लाइफ में ऐसा कुछ, if you are able to relate with the problems on screen and keep your ego aside, और आप just pick up, like, छोड़ना यार, बंद कर दे यार ये झगड़े वगड़े सब, just keep it aside and just meet me. If a film can do that, wow. Yeah, तो हम बहुत रोए. बकायदा हम लोग देख रहे थे ये फिल्म हैदराबाद में. We were watching a Marathi film in Hyderabad, which was houseful. I had to make few calls. We traveled an hour and a half to some interiors of God knows where were we. Wow. पर हम लोग को टिकट मिली और हम 1, 2, 3 नहीं, हम लोग ऐसे 14-15 लोग गए थे मिलकर पूरी टीम, क्योंकि हम जल्दी पैकअप हो गया तो क्या करें. So it's a ritual. अगर आपका पैकअप टाइम से जल्दी हुआ, you go watch a movie. आज यही करेंगे guys. जी. I'm actually watching a Turkish film, so that's on my list. Oh. And मेरी ना मराठी फिल्म्स की नॉलेज काफ़ी बेसिक है. जैसे मैंने किला देखी. किला is also one of, like, किला की DVD हम लोग ने घर लाके we used to always watch it. Yeah. And मैं तब ना like राजीव मसंद, अनुपमा चोपड़ा सबको बहुत हमेशा से फॉलो किया. I remember him giving 4.5 or 5 stars to किला. और मेरे को हमेशा याद था ये पिक्चर. It's a story of the little boy, no? Yes. जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल. And he's the same guy who has made 3 of Us, right? Yeah, right. And Shefali ma'am, and the film got so much love and appreciation. Oh my God, she's so good in that film. तो बट लाइक अगर फॉर अ पर्सन लाइक मी जिनकी बहुत बेसिक नॉलेज है मराठी सिनेमा की, और फ्यू फिल्म्स की यार इन पॉइंट्स जो आपको देंगे यार ये देख के आप, मुझे लगता है सबसे पहले आपको देखनी चाहिए आनंदी गोपाल. ओके. आनंदी बाई जोशी इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर who studied in that era, you know, and इंडिया की पहली डॉक्टर है यार. पर वो ऐसी नहीं बनी. हर हस्बैंड पुश्ड हर, सपोर्टेड हर, एंड समीर विद्वांस इज द डायरेक्टर ऑफ आनंदी गोपाल. इट वन नेशनल अवार्ड एज वेल. मैं उनको बिल्कुल जानती नहीं थी. मैंने फिल्म देखी एंड देन आई रिमेंबर आई वॉज लेट टू द पार्टी. और जब भी वेन एवर यू आर लेट टू द पार्टी, आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये फिल्म मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी. तो मैंने उनको फ़ोन किया और बहुत सारी बधाइयाँ दी. एंड ही इज़ द सेम डायरेक्टर सत्य प्रेम की कथा जिन्होंने बनाई. आई मीन, कैन यू बिलीव ही इज़ द सेम पर्सन हुज मेड आनंदी बाई गोपाल. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ बायोपिक, बट इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी. Story of a girl coming to an age, you know, a girl who is a child who turns a teenager. Then she's married, but they're still waiting for her, for the right time for her to go move in with her husband. And कैसे उनका, because she loses her first child is when she's so determined to be a doctor, so that जो चीज़ उन पर बीती है वो किसी और पर ना दे. मतलब it is just so endearing and so nice, and बहुत अच्छा लगा. I was smiling. I remember I was smiling and crying at the same time. और बहुत कम ऐसा होता है where you feel these emotions. So Anandi Gopal is the film you must definitely watch. Second is Baipand Bhari Deva. रोहिणी मैम है उसमें, और रोहिणी मैम इज़ ऑल्सो शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विथ मी ऑन फैमिली स्टार. तो बहुत मज़ा आता आहे जब दोन मराठी मुली अशा साऊथमध्ये तेलुगू फिल्ममध्ये भेटतात. यू नो, वी सो इट्स अ साऊथ फिल्म, इट्स अ तेलुगू फिल्म. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. So these two should be your priority for sure. Done. Is there a film which you defend कि यार इसको कुछ नहीं बोलने का? कोई होता है ना एक लाइक जिसको लेके कंसेंसस होता है, ये क्या था, but you're like nope, not about this. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब I think audience के views होते हैं, हर एक उनके opinions होते हैं. कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ नहीं आएगी, and it's okay. Yeah. एक चीज़ जो मैंने एज एन आर्टिस्ट
अपने दिमाग में, अपने रोम में डाल दिया है, दैट इज पीपल आर नॉट हियर, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू. जो कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ आपको नहीं पसंद करेंगे, इट्स ओके. आई मीन not everyone is obliged or it's necessary for them to like you. So ठीक है, कुछ फिल्में अगर आपको पसंद है ठीक है, नहीं तो और भी फिल्में हैं, वो देखिए. I am very curious. This is something I ask all my guests. This is not a recommendation, but हम सबकी लाइफ में बहुत सारे failures होते हैं. Which is your favorite failure? Oh, my favorite failure is एक फिल्म थी जिसका मैं हिस्सा बनने वाली थी. मैं बहुत रोई. 9 महीने के प्रिपरेशंस के बाद वो फिल्म मेरे हाथ से चली गई. someone else had to got to be a part of that film. और तकरीबन 1-1.5 साल बाद जब वो फिल्म रिलीज़ हुई और फिर मैंने फिल्म जाके देखी, and I was like, you need to learn a lot of things, Mrunal, because I realized that character was so difficult कि शायद मैं नहीं कर पाती. बट जब तक वो फिल्म रिलीज हुई नहीं तब तक आई वॉज लिटिल अपसेट ऑन द फिल्म मेकर कि वाई डिड ही रिजेक्ट मी, आई हेट हिम, यू नो, आई हेट हिम और आई हेट हर. बट देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट फिल्म मेकर वॉज राइट. मे बी आई वॉज नॉट रेडी. सो एंड आई डोंट थिंक एनी फिल्म मेकर वुड वॉन्ट यू टू फेल. कोच भी होता है जब, तो वो उसी प्लेयर को भेजता है फील्ड पर जब उनको लगता है कि ही इज रेडी. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग ऑन द दिस इज आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस वाज माय इंटरप्रिटेशन. एंड मे बी इन माई हेड आई वाज लाइक थैंक यू सर फॉर नॉट कास्टिंग मी फॉर दैट पार्ट, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उस वक्त. आई वुडंट हैव लुक्ड अप्रोप्रिएट फॉर द पार्ट. लोग आते मुझे कहते कि ये क्या कास्टिंग है, ये तो फिट ही नहीं हो रही, ये तो लग ही नहीं रही है जो उसको लगना है. उससे अच्छा आई एम ग्लैड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पार्ट. वाओ. एंड डू यू थिंक बट आई यूज्ड ऑल द प्रेपरेशन, जो भी मैंने प्रेपरेशन वो करी थी उस वक्त, इट हेल्प मी फॉर लव सोनिया. वाओ. So I had to look like a 17-year-old, but I was actually 24 years old when I played a 17-year-old in, you know, Love Sonia. Wow, this is such a great story. So I just want to say thank you to the makers because शायद उन्होंने उस वक्त मेरे ऊपर इतनी मेहनत नहीं करी होती. 9 months they worked on me, on my dialect, on my body, and काफ़ी सारी चीज़ें. मेरे वर्कशॉप्स हुआ करती थी. कौन वर्कशॉप्स पे 9 महीने इतना इन्वेस्ट, 9 महीने में तो बच्चा आ जाता है यार, you know. So they worked on me and I feel like that's my favorite failure. I feel good about failing. वही मैं ढूंढ रहा था कि बहुत in hindsight the dots always connect. Yeah, that is there. And movies के बाद मैं आपसे shows की भी बात करना चाहता हूँ, but before I move to that segment, any other movie you would like to talk about? कोई ऐसी movie रह गई हो? I had so many things in my head and I've suddenly got blanked out. But can I talk about series जो मैंने अभी देखी है? Please. There's a 4-episode series, mini series if you can say so. It's called Unorthodox. आपने देखी है वो? नहीं. So Unorthodox story में एक लड़की है जो लीड एक्ट्रेस का नाम है शीरा हांस, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. It's about a girl who's Jewish, based in America, and what are the culture, what are the rituals, what are the things that the girl has to go through. मुझे नहीं पता था कि एक लड़की को इतने सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. शादी, प्रेगनेंसी, बच्चा, प्रेशर, शी इज़ यंग, शेविंग द हेड ऑफ, यू नो. और इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. अगर आप देखोगे उनका जो पोस्टर है, शी इज़ जस्ट रिमूविंग हर. सो द डे शी गेट्स मैरिड दे हैव टू शेव देयर हेड, द गर्ल्स, एंड दे हैव टू स्टार्ट वेयरिंग विग. I'll watch this. And it's so intense, but at the same time, I don't know how that girl performed, yaar. It's beautiful, and in the end, the climax, the way she sings one of the, I don't know if it's called prayer or one of the prayers, if I can say. She recites it. ऐसे रोमटे खड़े हो जाते हैं. It's a mini series. I'm sure you guys will enjoy it. Unorthodox. इसके अलावा, which are your favorite shows? The one about the chess, the gambler, the Queen's Gambit.
The Queen's Gambit. हाँ. Yeah, that's the one. I really love the way she's thinking, the way she's dealing with her personal lives, and also the way it is shot. Yeah. क्योंकि वो उन्हें like जब you see छत पे और वो दिखते थे. छत पे सारे वो चेस वो सब मूव हो रहे हैं. I think I remember watching the Queen's अरे Gambit. अरे I don't know why I keep saying the Queen's Gambit during धमाका shoot. जिस वक्त हमें क्वारंटाइन करके रखा था, तो करे भी तो क्या करें, यू नो. सो आई वाज प्रिपेयरिंग एंड देन आई जस्ट रेकमेंडेड दैट शो टू एवरीबडी, और सबको बहुत पसंद आया. एंड देयर इज सो मच यू लर्न फ्रॉम इट. या चेस इतना फेमस हो गया था उसके बाद. या एंड हाउ क्विकली शी, एंड द इंटरकट्स जो सीन्स में होते थे. एंड देयर इज वन शॉट जहाँ पे वो आफ्टर व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, बट जब वो आती है ऑन अ फाइनल व्हेन शी एंटर्स, oh god, that was goosebumps moment. It has a very strong pilot episode also. The whole thing with the pills and the guy जो उस like school में like वो जहाँ पे खेल रहे होते हैं. And her mom, her relationship with her mom. Yeah. As मैं shows की और बात करना चाहता हूँ. We'll come back to it. But as an actor, which is that emotion which fascinates you the most? Jealousy. Because we never show, and attitude. But attitude is also perceived negatively. उसका attitude देखा है, but नहीं, वो positive भी हो सकता है ना यार, क्या attitude है. But that word only they've taken it like we perceive it very negatively. Don't you think so? But how do I perceive jealousy positively? Not jealousy, I'm talking about attitude. But Attitude. jealousy ऐसी है जो ज़्यादा दिखाते नहीं हम. You know? Who are the honest people you have met who said, I'm jealous? मेरे को इस पे आपको एक चीज बतानी है. हमें स्कूल में एक चीज बताई थी, द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलेसी. जेलेसी में यू काइंड ऑफ वांट समथिंग बैड फॉर दैट पर्सन. एनवी में इट्स जस्ट एनवी कि मेरे पास ये चीज नहीं है, बट देयर इज नो बैड लेयर्स एसोसिएटेड विद दैट. करेक्ट. सो ये बहुत सही है, बिकॉज़ आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मोर एनवी वाले. आई थिंक इट्स ऑन द होल, बट यू नो ऑल्सो इन स्कूल, इफ यू आस्क मी, I think I remember learning only few emotions. Yes. How to be happy, how to be successful, how to be a leader, you know. But what about grief? Like I lost my grandfather and grandmother. Nobody taught me how to deal with the loss of your loved ones. Yeah, and जब आप किसी के दोस्त होते हो, किसी के साथ कुछ आता है, आज भी मेरे को मैसेज लिखना नहीं आता कि व्हाट डू यू करे क्या, कि व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू से, और हाउ डू यू फील. लाइक फेल होना वाज लाइक हाँ ठीक है, पास होना है. 10th बोर्ड के एग्जाम्स ऑल्सो आई वाज लिटरली ऑन फायर. जब हम लोग बोर्डिंग वो सब क्या लगाते हैं, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, बोर्डिंग, अरे दैट थिंग वी स्टिक ऑन द एग्जाम शीट. आप लोग के वक्त बारकोड सिस्टम था आपके वक्त? हमारे वक्त था कि हमें वो एक सेशन दिया जाता था 1 घंटे का. बारकोड अगर स्टिक नहीं किया, वो स्कैन नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, देन यू विल बी मतलब वो पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सो यू हैव टू राइट. कभी कभी यू गेट सो वर्कड अप कि आप गलत नंबर लिख के आते थे, तो इट वॉज वेरी हेक्टिक. बट पीपल ऑलवेज दैट टाइम it was okay to fail यार sometimes also. Yeah, मेरे को आपसे particularly I am very very fascinated by 2 emotions, grief and shame. तो grief को लेके तो मैं पिक्चरें भी जैसी देखता हूँ, और जो मेरा एक पर्सनल जहाँ बायस है, डिपिक्शन ऑफ ग्रीफ एंड डिपिक्शन ऑफ ग्रीफ कैसे दिखाई, डेथ का कोई कैसे आपको पोर्ट्रेल देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में ग्रीफ जैसे आ रही है, डिनायल वाला फेज कैसे देखने को मिल रहा है. Always fascinated by it. Have you seen this film, नसीर सर की Waiting? No, I haven't seen it. इसमें काल्की एंड लाइक नसीर सर आते हैं. मैंने काला घोड़ा फेस्टिवल में देखी थी. अच्छा. उसमें आई थिंक इट्स अबाउट लाइक नसीर सर's partner dying and सारे scenes हॉस्पिटल में. These two people are always there and you see all 5 stages कि denial, acceptance और वो देखने को मिलता है. आप अपनी बीवी के साथ डिस्कस करते हैं ये हर शाम कि डार्लिंग अगर तुम कोमा में चली गई तो कितने दिन लाइफ सपोर्ट पे रहना चाहोगी? वाओ. ऑलवेज आई एम लुकिंग फॉर स्टफ जहाँ पे आप, क्योंकि यही ना स्कूल में नहीं सिखाया कैसे करें, तो मैं ढूंढता रहता हूँ पिक्चरों में, किताबों में.
And But sometimes also, like I was talking about jealousy, envy, Yeah. insecurities, ये सारी चीज़ें, we also don't know how to differentiate it, fair, absolutely. है ना? Because then sometimes we only don't know what we are feeling, Yeah. you know? You're feeling a mixture of all. But वो जो होता है ना नवरस, उसमें से सिर्फ कुछ को हम लोग appreciate, सही, like movies भी जब बनती है, प्यार, फिर रिवेंज, Yeah. इन सारे ये दो मुद्दों पे ज्यादा बनती है, if you ask me. Yeah. जेलिसी की कोई आपको फिल्मों में ऐसी कोई डिपिक्शन याद है यार कि I don't remember anything else. हाँ, मासूम, शबाना जी. Yeah. You see that child, जब उनको पता चलता है, and उस फिल्म से वो जो गाना लकड़ी की काठी, that was my favorite. But जब उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा नसीर सर का है, the way Shabana ji has played that part, oh my God. Yeah. And you can feel that, you know, she wouldn't do much, she wouldn't say many dialogues, वो आंखों में ही दिख जाता था. Yeah. So if you ask me, maybe that's one film. थोड़ा कुछ हिस्सों में, Yeah. could feel it. I was doing the episode with Manoj sir this morning. मैंने same चीज़ उनसे पूछा. उन्होंने प्रेम की बात की. When I talked about the अच्छा. emotion he's fascinated by, and he's like not the love between a guy and a girl. It's like in the small moments where you see a god in someone. He's like कि जब मेरे को कोई actor पसंद आता है तो मैं उन्हें बोलता हूँ I see God in you. Wow. And I was like कि यार क्या बात कह दी कितनी, sir? हाँ, this emotion is so pure. जब like आप just when you're so fascinated by someone, when you compliment them, when you're like कि just your existence Itself me- is so, yeah. makes me happy. Very, as an actor मेरे को तो बहुत मजा आता है. जेलिसी मेरे को लगता है बहुत लोग बोलेंगे नहीं, सच्चाई से नहीं बताएंगे कि यार जेलसी अगर आप अपने लाइफ में देख ले, Yeah. तो जब नवी दुल्हन जब घर आती है, तो you should see the mother's face when Yeah. the new bride is home. It's like मेरे बेटे को कब्जे में ना ले. सास भी बहू थी इस reality. Yeah, that's why सास भी कभी बहू थी. Now you know what I mean. Yeah. टेल मी लाइक ऐसे ये पुराने जो शोज हैं, आई नो आपने लाइक टीवी भी किया था इससे पहले, कोई ऐसे शोज हैं जो आपको उस जमाने के पसंद हैं? All the K-dramas. सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, कसम से, हम लोग सब बैठते थे, we used to all sit down, हम लोग का टाइमिंग्स होता था, we used to watch कहीं किसी रोज, कसौटी की used to come at 8:30 सब लाइन कहानी घर घर की, कहानी घर की. We're such big television buff, my God. अब हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे, डिड यू वॉच जस्सी कोई नहीं? Oh, Mona Singh, oh my God, did you watch सोनपरी? इट्टू बिट्टू जिम पुतूता. मेरा हमेशा से फैसिनेशन था. You know, हमारे पास केबल नहीं था, हाँ. तो कभी कभी ना I used to feel very like ashamed कि अरे इसके घर पे केबल नहीं है. So what I used to do, I used to ask my friend जिसके घर पे I think Star Plus it used to come on, right? तो मैं उनको पूछती थी कि, and it used to come every Wednesday, बुधवार, yeah, I think every Wednesday or Wednesday, it was Wednesday. So I would ask her कि क्या हुआ, she would tell me the entire story. Even Shakalaka Boom Boom is so popular. मेरे को याद है वो जो भी बनाऊं, मतलब मैं पूरा संजू, हाँ, मतलब मैं आपको ओपनिंग टाइटल उसका पूरा Shakalaka Boom Boom, मैं हूँ लड़ाकू, लाइक ऐसे वो हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन. अरे क्या दिन थे यार वो, और वो सीरीज क्या थी, माय गॉड. इट वाज एक्चुअली वेरी क्रिएटिव. वेरी क्रिएटिव. इवन जनक शुक्ला, एक करिश्मा का करिश्मा, वो शो, फरीदा मैम का भी एक शो आता था, शरारत. ओ डूड, शरारत. 8 to 10 PM आपने मेरे 5-6 साल के लाइक अभी सारे बोल दिए. लाइक दिस वाज माय, एंड यू नो मैं ऐसे लाइक फैमिली से आता हूँ जहाँ लोगों को हम ऐसे बात नहीं करते, हाउ आर यू डूइंग वगैरह. हम लोग सिर्फ शोज के बारे में बात करते हैं. नहीं, हमारे वाइट नॉइज के जैसे चलती रहती है ये चीजें. अच्छा, कि बस हाँ देख रहे हैं वाइट नॉइज है, पीछे चल. मेरे को याद है व्हेन आई यूज्ड टू सिट विद माय ग्रैंडमदर अ लॉट, शरारत और ये सब वाइट नॉइज के जैसे चल रहे होते थे कि इट हैज, मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग तो उसमें भी हो रही है ना. एंड यू नो सोनपरी का तो मेरे को इतना फैसिनेशन था, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कुछ साल पहले, एंड आई एम लाइक कि मैं अल्तू अंकल को कास्ट करूंगा, एंड आई कास्टेड अल्तू अंकल एट इट. वाओ, ओके, Yeah. कांग्रेचुलेशंस. Yeah. एंड लेट मी टेल यू,
मेरा जो पहला शो था खामोशियाँ ऑन स्टार प्लस, उसमें द मॉम वाज वेरी लाइक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फैंटास्टिक कैरेक्टर. मैंने उनसे पूछा कौन प्ले कर रहा है ये पार्ट. उन्होंने कहा कास्टिंग चल रही है. एंड आई वाज वेरी क्यूरियस. एंड नेक्स्ट थिंग आई नो कि कल मीटिंग करनी है आपकी सारे एक्टर्स के साथ, स्पेशली आपके मॉम के साथ. आई सेड ओके. मैं रेडी हो के आई. आई डिडंट नो हू इट वाज. एंड आई एम स्टैंडिंग इन द ऑफिस. The door opens and ma'am enters and she introduces herself. Hi, I'm Mrunal. And I say, hi, I'm Mrunal. I said, Sonpari. And she played my mom. Holy shit. Can you beat that? So because she's Moti Mrunal, like Badi Mrunal, we used to call her Momru. And I was Choti Mrunal, so they used to call me Chomru. So Momru Chomru on set, ताकि confusion ना हो, because there were two Mrunals on set. And how much, I mean, I told her like what a big fan I am of Mrunal ma'am, and it's surreal for me to share my screen space with her, जहाँ पे हम छुप छुप के दोस्तों के घर जाके सोनपरी की स्टोरीज, फ्रूटी और सोनाटी की स्टोरीज जानते थे. एंड हियर वी आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद देम. दिस इज ब्यूटीफुल डूड. Yeah. क्या हमें लगा बहुत पिक्चर पे बॉन्ड करने, हम दोनों सोनपरी पे बॉन्ड कर गए. एग्जैक्टली. सोचो. या मेरे को एक और चीज़ बताओ, सिंस हम ये 8 to 10 की बात कर रहे हैं जो टीवी पे आता था, मेरा लाइक 5 to 8 कुछ और चलता था, तो मैं कार्टून्स देखता था. विच आर सम ऑफ योर फेवरेट कार्टून्स? टॉम एंड जेरी. आई मीन वो सबका ही फेवरेट है. बट उस वक्त मैं देखती थी बेन 10, क्योंकि उसके पास वो ओमनीट्रिक्स की वॉच होती थी. और आई रिमेम्बर बेन 10, ग्वेन उसकी बहन होती है उस पर. उस वक्त शिनचैंग आया था, but I was not really fan. My brother was a fan of I was like ये क्या है पूरा दिन ना ऐसा ना करो, वो ऐसी मेरे को इरिटेट करता रहता मेरा भाई मुझसे. फिर उसके बाद then after few years Augie and the Cockroach and all अच्छा लगता है. आपका कभी वो टाइनी टीवी फेज आया था, ये जो पोगो पे आते थे, ऑसवर्ल्ड, नॉडी, वो सारी चीजें जब मैं मासी के घर आती थी ड्यूरिंग माय वेकेशन, क्योंकि वी डिड नॉट हैव केबल, सो दिस लग्जरी दैट यू टॉकिंग अबाउट, पोगो, कार्टून नेटवर्क, स्टार प्लस, सोनी, ये था ही नहीं. वी ओनली हैड DD1 एंड सह्याद्री वाहिनी, दैट्स इट. सो when we used to come to Bombay to visit our Masi and uncle, that's when my parents wanted me to become a doctor. Yeah. So हम लोग we were glued to TV. और वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई कहता है कि ये मत करिए, तो you tend to do that even more. Yeah. And मेरे को यहाँ पे भी कि जिन लोगों के घर में केबल टीवी एक जेलेसी होती थी. मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मेरा बड़ा भाई है, उसका पूरा कैरेक्टर आकी है कि हमारे घर पे टूथपेस्ट से बाका आती थी और मेरे चाचू के घर कोलगेट आती थी, और कुछ जगह पे मिसवाक भी आता था. मिसवाक इज a tier above them. I mean, उसके रेंज है सारे. It's crazy, but तो yeah, I understand. मतलब पूरा कैरेक्टर आग उसका हमारे घर से बाका क्यों आता है, एंड लाइक ही आल्सो बिकॉज उस पे 1+1 फ्री होता था. Now you know. बड़ा सा आता था सुबह. हाँ, एंड देन द लक्स का जो हम लोग 3 पैकेट खरीदते थे, सोचते थे कि एक दिन गोल्ड कॉइन निकलेगा उसके अंदर से. या एंड तब शाहरुख खान भी आता था, वो अब 10 में लक्स. I used to only buy Lux for Shahrukh sir and Madhuri ma'am and Sridevi ma'am. हाँ, जब सारे coin which I never got. Oh, dude, that ad was iconic. When all those. Oh my god, that was iconic. That was truly iconic. और इस मौके पर लक्स को चाहिए था सुपरस्टार, तो मैंने कहा मैं हूं ना. जल्दी कीजिए, ऑफर कल हो ना हो. That's the only Lux ad I remember. Like everything was pink in it. मेरे को शाहरुख खान के बाल भी याद है उसमें. I mean, that era was something else. Yeah, and ऐसे कोई ads और याद है आपको? Like हाँ, Cadbury, सब Cadbury का होता था. दुनिया डेयरी मिल्क बन जाए रे. I remember this. डेयरी मिल्क का पंछी, डेयरी मिल्क का पेड़. डेयरी मिल्क का पोस्टमैन आया, चिट्ठियाँ लाया, उसने पूछा कौन है तू. I remember every frame of this. Yeah. दुनिया डेयरी मिल्क की बन जाए, डेयरी मिल्क के पंछी, डेयरी मिल्क के पेड़.
my god. And then हम लोग when we used to eat a chocolate, we used to keep that golden foil inside the drawing book. And किसी का birthday होता था, so we used to write alphabets ulta, so it used to emboss. And we used to stick that on the greeting card. बहुत मस्ती किया हम लोगों ने. ये बहुत सही है. And all the OG Fevicol ads. Oh, Fevicol ad. I met Ram Madhwani sir that day और मैंने कहा अरे you know how when the car is entering they sit on the car and they open their was it Fevicol ad. Happydent. No, that was Happydent. Sorry, that's not Fevicol. Not Fevicol. जिसमें white. Yeah, and it was so nostalgic. Yeah. Even in the classroom, जब lights चली जाती थी, we used to say, and we used to annoy teachers. Sorry, we did that. Yeah. We would start randomly saying, "Live boy है जा, तंदुरुस्ती है वहाँ, live boy," and then by the time teacher turns back, like, कौन था वो? Yeah. You know. Classroom से मेरे को वो याद आता है. कहाँ जा रहे हो? Sit down. Mentos, yeah. कहाँ जा रहे हो? Oh, in my head was that Ishan was when he's like, oh. जब उसको punish करके, oh God, I want to ask you, what would you do when you were punished? What would I do when I was punished? Outside. वो आधा घंटा 1 घंटे का जो class, suppose maths. एक बार तो मेरी like. Oh, I would always stand out. Yeah. So एक बार तो I was kicked out of the class because of my crush. पहले वो बाहर गई थी and then I made a noise or something and Annie ma'am थी उन्होंने बोला Vaibhav you also go out and join. देखो मैंने bro cheering हुई थी क्लास में कि यही तो चाहिए था. This is the moment I waited for in my life. Oh God. कि अंदर क्लास चल रही और हम दोनों बाहर बैठे हैं. तब बात करनी नहीं आती थी तो I didn't know मतलब I would have पक्का ruined it. नहीं तो स्टोरी कुछ और होती. Oh God, but every time I would get kicked out of the class, was not doing homework. मुझसे कभी नहीं होता था. My books were always incomplete. But I just needed a companion outside जो मेरे साथ classroom के बाहर खड़े रह सके. So we would do like all moonwalk. Oh God. And then I would want to be that one person जिसका birthday हो, जिसकी chocolates मैं पकड़ सकूँ और पूरी classroom जा सकूँ ताकि मेरे सारे periods bunk हो जाए. Yeah. You know what all I've done in the hostel? I used to stay in a hostel. So my roommate used to steal my shampoo. And I removed the shampoo from the bottle and put it in a ghee ka dabba and added a wheat removal cream in my shampoo. Oh. And I was like, okay, rest is history. I was sick. Why would she steal my shampoo? Crazy. But this is how. Also in the library we only had one plug जहाँ पे हम लोग charge कर सकते थे. We did not have any socket in our room. So everybody used to go to the library to charge their phone. And have you seen a mountain of 3 pins? Like extension pe extension pe extension pe extension pe extension. And if somebody acts over smart, you just look at that person and you do this. Ting, and then there would be like a blast. ना तेरा phone नहीं charge होगा, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है तेरा भी नहीं होगा. It was crazy. That it wasn't a hostel. It felt like crazy. It was hilarious. It was. Now I think about it, I'm like, what all I've done and what all I've been through. Yeah. What all I've gone through. Yeah, it's crazy. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैंने बहुत सारी सहेलियों से एक सेम कंसिस्टेंट कंसेंसस जो मेरे को मिला है कि दे ऑल हैड शिटी रूममेट्स. Yeah. Shitty. Is that a thing? I don't know, yaar. I didn't sign up for that, but वो हो गया. Very, very, like she would make sure that she'll ruin my sleep during my exam. She'll like, it was tough. And उसमें भी सुना है कि split wise पे ये बिल आ जाता है कि तूने मेरी bread ली तो ये पूरा हो गया वगैरह. नहीं, so I was very clear. I don't like. I'm Leo, yaar. I can't share my things. I'm also a Leo. I cannot. You do not. So if you touch my things, it's yours. ये लियो का कुछ होता है मेरे को नहीं पता. Like if I give it to my sister also, like you use this, and if that thing doesn't come back, then I get very upset. So what I do कि ये तू रख ले, मुझे चाहिए ही नहीं. But just do not touch my things without my permission. I don't know, it's just a thing. It can be half a slice of bread also. Yeah. Or that one 5-star piece. Yeah. Chocolate lying in the fridge. You know, it's just a Leo thing. I don't know why. पक्का it's a Leo thing? I guess so. You don't think so?
नहीं मेरे को यार वो जोडियाक साइंस का थोड़ा लगता है पीपल कैन गेट अवे विद एनीथिंग यार मैं पाइसेस हूँ तो मैंने मर्डर कर दिया मतलब समझ एक होता है ये भी कि यार मैं तो एक्वेरियन हूँ तेरे को नहीं पता एक्वेरियन का ये सीन है people get away with things you can't even imagine. But I think for me, it's like if I like I'm very loyal when it comes to my friends, my people, my family. You know, absolutely. I'm very possessive about them. Like I want to make sure that I want to give the best. Like that's a Leo thing for sure. Nah, nice, yeah. They are the leader of the pack and yeah, like, they want protect the best. them. They only want the best for their family and they always want to protect and give the best life. Very nice. मेरे को यहाँ पे बताओ जैसे आपने लियो ट्रेट्स बताए which are some of the things core value wise जो आपकी value system का बात है these are the things in general I look in friends, people I work with, partners. See, I like honesty, so I do not have a lot of friends, but I have 3 who are equivalent to 3,000. And I think I like to surround myself around people जो डरे नहीं कि if they say this is really bad, they should say this is bad. Right. And I have seen people around, you know, where they just even though it's crazy, it's awful, they're like, oh bhai क्या बात है, क्या मजा आ रहा है, yeah, this is so good. And like real life में acting मतलब it's too much, yeah. I want someone to scold me. I want someone to say कि this is not right, this is wrong. Yeah. Can I also give you an advice? जब लियो वाले ट्रैक पे लियोस के लिए बोला जाता है स्कॉर्पियन से बच के रहा करो, वो आपका और मेरे साथ हुआ है. बच के रहा करो. स्कॉर्पियन जो ज़ोडिएक साइन वाले होते हैं वो थोड़ा काट देते हैं लियोस का. लियोस को सिर्फ बिकॉज लियोस आर लियो लाइन है बट उनको सिर्फ डंक एक स्कॉर्पियन मार सकता है. Really? I was actually talking to a Scorpion. हाँ नहीं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. आप समझ गए ना मैं आपकी बात कर रही हूँ. नहीं जो कैमरा जो मेरा इंटरव्यू ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं देख रहे हैं. बाकी भी आर सेफ. बाकी जितने भी होते हैं दे आर लाइक चिल. Sun signs are good. हाँ बाकी. But you know this is what I do. I keep adding all these like Leo traits in a character, like Gemini traits in a character that I play. Yeah. So सबसे पहले when I get a character कि अच्छा if this is Sita Mahalakshmi, then when would she be born? What are her traits? So, and all the people around me are different sun signs, and I believe a lot in that. Okay, and it's very beautiful how they're so different from each other. All the sun signs are so different from each other. Yeah. Although I must not depend totally on it. Yeah. But yeah. मेरे को तो ये लगता है कि ऐसी एक हाइपोथेसिस है मेरा कि सीता रामम में नूरजहां का कैरेक्टर वाज द संजय सिंघानिया ऑफ दैट स्टोरी. Who came up with this thing? मेरे को मेरे दो मैंने कहा कि मैं बोल सकता हूँ. मैंने मेरी टीम को बोला मत बोलना ब्रो. Oh my god. Yeah. सही है ना? I guess yeah. Bro. Yeah. I agree with your friends. No, this was my theory. This was your theory. My friend said मत बोलना. क्यों नहीं बोलना यार? कि ये लैंड नहीं करेगा. अरे यार खतरनाक मिस्टर सिंघानिया. ये तो एक ब्रो ये तो संजय सिंघानिया है. Wow, what do you think? Cool, yeah. Yeah, and my just like a word of like compliment मेरा उस फिल्म में सीता रामम में जब वो पैरों की जो दो शॉट है ना the red and the blue. Oh God, that has a history by the way. बताओ. So वो सीन हमने कहीं और किसी वक्त शूट किया था और मुझे पता है फिल्म के एंड में जब लास्ट फ्यू जो कुछ सीन्स हमारे बचे थे तो अचानक सबका पैकअप हो गया एंड देन अचानक कहा गया कि आप सेट पे ही रुकना, आपके जूते मंगवाए जा रहे हैं, हमें सिर्फ वो एक पैरों का शॉट लेना है. सो वी पैच्ड इन दैट देन. इट वाज या मैन. या सो वो सीतारामम में ब्यूटी जैसे ये द ब्लू बटरफ्लाइज एंड ऑल डूड लाइक हर जगह द कलर्स एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था. मैंने वो फिल्म देखने के बाद वो देखी थी बॉम्बे, Manisha Koirala ma'am, and she was also in the blue sari. And I don't know, there's something about the blue sari, the blue color. Big fan of blue color. Yeah. Can I recommend you something? Sure. So मेरे को तो gloomy चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा था बहुत ज़्यादा पसंद है. So there's this Facebook page. The only reason I use Facebook, I'll show it to you.
इट्स कॉल्ड अ वे टू ब्लू. सो वहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स दिखाई जाती है रात की जहाँ पे देयर इज अ मून एंड देयर इज ब्लू कलर. Wow. And it does something to me every time I see good depiction of blue. And बोला जाता है a lot of artists have a thing for blue color. पता नहीं वो the way it kicks in nostalgia, the way it kicks in some memories which you might be artificially creating. Blue के साथ होता है वो. Yeah, I mean there was also one scene I was shooting for Hai Nana by the ocean, or you know those I always forget that algae एक आता है. So you see that blue color, you know, when you move. What is it called? Bioluminescence something, yeah. वो जो ocean में आता है. Ocean में. Yes, So we yes, created that scene. It was so beautiful of Shaurya Garu to think about it even. Yeah. क्योंकि जो चीज़ कभी witness नहीं करते हैं, you know, to show that it was beautiful. I think you should have a look at it. You'll really be like, wow, what just happened? We had to cancel one day of shoot क्योंकि low tide हो गया. We went to shoot और पानी ही नहीं था. Yeah. And you know, just for the color blue, एक Brad Pitt की फिल्म है Ad Astra. I don't know if you've seen No, it. I've not It's seen it. basically like a guy who is a astronaut and his father is away. And away, मतलब he's on Neptune. So it's the story of him going to Neptune to rescue his father. एंड इसका जो पार्टिंग सीन है जहाँ पे एक डोर से वो एक दोनों बंदे होते हैं एंड वो फादर इज लाइक लीव मी, मेरे को नेपट्यून ही रहना है. वो कट होता है एंड नेपट्यून पे यू सी द होल ब्लू प्लैनेट और वो दोनों अलग हो रहे हैं. Wow. ब्रो यू हैव I'll go watch it. या मैंने मामी में देखी थी एंड जैसे मैंने आपसे पूछा ना कौन सी पिक्चर है जो आप बहुत डिफेंड करते हो, Ad Astra is one film I'll defend for life. Life, okay. कि ये एक पिक्चर है भाई. आई नो कि बहुत लोग बात नहीं करते when people talk about films from space. ये 2001 and like First Man and all are talked about. Ad Astra is one film. One film that not many talk about. Yeah. Okay. ये आपका देखिए. Where can I watch this? no. मैं Let me know. या बताऊंगा. Netflix या कहीं तो होती थी एक टाइम पे. बट मैंने कुछ गलत चीज़ें भी की थी एक बार ढूंढने के लिए कि मतलब मेरे को पता है OTT हटाते रहते हैं कभी कभी फिल्में. तो मेरे को था कि लेट मी मेक श्योर इट इज. No, कहना भी मत, सजेशन भी मत देना लोगों को. तो वो एक बार के लिए मैंने रख ली. बट बकायदा कुछ लोग आके बोलते हैं हमने फिल्म देख ली आपकी. आई सेड कहाँ? ले यहाँ से तुम लोग को शर्म नहीं आ रही, तुम आके बोल रहे हो मुझे. यार ऐसे मत करो. या You know, there are some indie filmmakers who have gone on record to say कि तुम वहाँ से देख लो क्योंकि OTT पे वो कहीं ना कहीं उस पे म्यूट किया है, कुछ किया है. हाँ. वो भी होता है. इट्स अ इंडी फाइट जो लोग करे बिकॉज दे आर तो फाइटिंग बस तुम तक पहुँच जाए. या दैट इज ऑल्सो देयर. या सो दैट इज देयर. बट आई एम ग्लैड हमने मूवीज और शोज की इतनी बात की. मेरे को अब नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करना है विच इज बुक्स. Books, literature, poetry. So what's your relationship with books? Wasn't really good. क्योंकि मेरा escape was films. But वो कहते हैं कि वाचन is बहुत important. वाचन करायला पाहिजे. My dad always scolds me. So I always started with poetries. In fact, I got so inspired by Rupi Kaur. उनका शो देखने के लिए मैं एक बार LA में शूट कर रही थी. लव सोनिया जब LA में स्क्रीन हो रही थी उस वक्त इन वन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स. उस वक्त वो परफॉर्म भी कर रही थी वहाँ. सो हाउ डज शी परफॉर्म? शी रिसाइट्स हर पोएम्स. राइट. या सो शी वाज रिसाइटिंग हर पोएम्स एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक एंड शी वाज रीडिंग फ्यू फ्रॉम मिल्क एंड हनी and I remember I was sitting next to my friend. I was just like holding her hand and holding his hand and just crying because sometimes ये जो poems होती है चाहे वो 4 शब्द ही क्यों ना हो but इतने गहरे होते हैं that it just pierces through your heart, like in your heart. And hard to relate. And sometimes I felt it was so therapeutic. I don't know, I really like the way she writes. Yeah. वही है कि कभी कभी कुछ शब्द मैं इसलिए इंस्टा पे भी बहुत सारे ऐसे हैंडल्स फॉलो करता हूँ जहाँ पे 4-4 5-5 लाइनों में you get to learn so much about love, life, emotions. Yeah, there is this guy from Gujarat, his name is Ashish. वो भी बहुत अच्छे poem. I'll share his Insta handle with you. बहुत अच्छी poems लिखते हैं. There's one more book called Pillow Thoughts.
Nice. Like you just, so what I've done, I keep it next to my pillow. और सोने से पहले 1 या 2 पेजेस, मतलब कितनी 4 लाइनें पढ़ के आप सो जाओ बस. There's so much you learn from them. Yeah. And what about fiction? Fiction का कभी आपका phase आया? जी, Palace of Illusions. I really like the different take on Draupadi. मतलब I was like, what? Wow. In fact, I was reading it again. बहुत वक्त हो, जब रिलीज हुई थी बुक तब मैंने पढ़ी थी. Now I'm reading it again. It's really nice. You must read it. The Palace of Illusions. Nice. And books में कोई ऐसे particular genres है that like? I like autobiography for some reason. Nice. I've read Charlie Chaplin. जो इंसान सबको हंसाता था, उसकी लाइफ क्या है? Yeah. Oh my God, his journey. You wouldn't even believe, like the person who's gone through so much pain. जैसे कुछ बताइए हमें. मतलब like he preferred crying in the rain so that no one could see his tears. It's ये वो एक pinches your heart, you know. There's like, this photo you see ना, एक meme है या क्या, the guy who makes everyone laugh, वो हमेशा घर आके रोता है. Yeah, so. But the person who's being kind to you is not being kind to you is because people were not kind to him. That's why he's kind to you. Yeah. You know. Yeah. But anyway, wow. See, ये भगवान का देन समझो मैं क्या? Why is he not being kind to us? Yeah, I think something fell off. Anyway. Yeah. So yeah, and then I also like this book by Michelle Obama called Becoming. Yeah. उनकी लाइफ के बारे में, how she met Barack Obama, about her life. It's nice to learn so many things from her experiences. Yeah. India में भी like are there any authors or like You know, Rita is my friend and who also wrote a book about Savitri Bai Phule, and she was the one who pushed me to read a lot, and she would keep sending me books. So I'm very thankful to all these friends who would always keep sending lovely books. So Savitri Bai Phule is something that I'm reading now, and it's really interesting that how she, you know, like girls' education was so important then. Yeah. So all these things, all like Becoming is one of my favorite. Then Palace of Illusion is one of my favorite. And how do you consume these books? Like a paperback prefer करते हो, Kindle? I need it with me. I need a copy with me. Nice. Because whenever you're traveling and you're so exposed to screens, Kindle sometimes that is also on standby when you do not have a book. You need to read it ASAP. अगर कोई recommend कर देता है तो you can't wait for it to be delivered or you can't get that particular वहाँ पे book. Kindle is amazing. Amazing. Yeah. So, but अगर आपके पास एक physical copy है तो why not यार? I mean वो मज़ा तभी आता है. Yeah. You know जब वो bookmark and the smell of the book. Yeah. And I always have a pencil with me क्योंकि जब आप कुछ समझ में नहीं आता so always circle it and you go back and you find the meaning, then आपकी vocabulary भी better होती है. 100% agreed. And मैं तो spellings, जो रंग का पेन मिल गया, पेंसिल मिल गया, मैं तो कि ये मेरी चीज है. I don't use pen क्योंकि फिर वो बुक कोई और नहीं पढ़ सकता. हाँ, नहीं पढ़ानी मेरे को. मैं तो ये it's my no, thing. this is my thing कि मैंने अगर बुक पढ़ ली तो मुझे वो किसी ना किसी को देनी है ताकि वो भी वो बुक पढ़े. It's not just lying in my bookshelf. So I pass it on. मैं तो गिफ्ट करूँगा, मैं मेरी किताब तो नहीं दूंगा. मैं क्यों देखूँ कि मैंने क्या अंडरलाइन किया? मतलब I don't want them to get that much insight about my mind. No, but it's interesting. Suppose अगर किसी और की बुक, किसी और ने पढ़ी हुई बुक आपको मिलती है और वो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन हो जिनका मतलब आपको नहीं पता हो. इट्स अ गेम यू प्ले. अरे ये तो मुझे पता है. अगर नहीं पता कि ओ ये तो मुझे भी नहीं पता है. और यही तो हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस का प्लॉट था. Oh, exactly. Harry Potter. Oh my God. I have all the books. I've given it to my nieces right now. I've read all. Goblet of Fire is my favorite. Yeah. Nice. मेरे को हाफ ब्लड प्रिंस सबसे ज्यादा. बुक्स में हाफ ब्लड प्रिंस is the one I like the most, and movies में Prisoner of Azkaban. Yeah, I was rewatching. कुछ होती है ना comfort films, you keep going back. और वो चलती भी रहती है टीवी पे. वो चलती रहेगी. कुछ ना कुछ ऐसे कंफर्ट आता है वहाँ से कि यार इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी मेमोरी जो थोड़ा इग्नाइट करती है. सो दीज आर द है यार. हैरी पॉटर का यू नो व्हेन द 7th बुक केम इन, मैंने चीटिंग कर ली थी. मेरे को देखना था हाउ इट एंड्स एंड मैंने सो यू रेड द एंड फर्स्ट. आई रेड द लास्ट लाइन एंड यू नो व्हाट्स द लास्ट लाइन ऑफ द
whole like series. Cheater. There are 3 words. The last line of the whole That series. is? All was well. I'm like, चलो हाँ आप बताओ अच्छा. अरे यार नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ. मैं ये बस हैरी पॉटर के केस में किया. अदरवाइज तो मैं ट्रेलर्स भी. I bumped into Daniel Radcliffe, by the way, on the streets of New York. मैं एक ब्रॉडवे शो देखकर आ रही थी, सिम्बा, and I'm just walking with my sister. My sister is in her own world. She's like, oh, makeup, how, whatever. And suddenly I look, Daniel Radcliffe, he was performing. I didn't even read what he was performing. Look down and oh my God, he's standing right there. And I'm screaming at Lochan. I said, Lochan, I see Daniel Radcliffe. She's like, who? I said, Harry Potter. And he turns around, I scream, Harry, I love you. And he says, oh, thank you. And I melted. So I had my fan moment there. Oh. I stood there in the queue for about like, I don't know how long, but I got my picture. I spoke to him. I told him immense respect for you because the way they shot the sets were very challenging, especially that age that they were shooting at. Yeah. And you know, he broke out of. बहुत एक्टर्स कैसे होते हैं ना, जब कोई एक चीज बहुत हिट हो जाती है जो एक बहुत बड़ी. So you can't. हाँ वो नहीं, इसने तो क्या ब्रेक किया. Swiss Army Man and everything. I mean, look. I mean, he's so good. Yeah. He's truly a performer, yeah. मेरे को तो ये लगा है लेटली कि everyone needs to make a twilight of their life और उसका जो करना है करो. I can be a Bella. Yeah. I can be the Bella. I need a Jacob in my life. And an Edward also. Edward was the vampire. Jacob was the wolf. Yeah. Oh my God, I love Twilight. Yeah. In fact, I still. Anyway. बताओ. नहीं. In my like मैं बताता हूँ, मैं तो 9th standard में. मुझे तो अभी भी लगता है when I die I'll become a vampire. Yeah, anyway. नहीं I need to talk about this. Why are you like wanting to change the topic? मैंने तो New Moon पढ़ी थी 9th standard में. वो मैंने पढ़ी नहीं. Twilight I didn't read. And New Moon like had a very good depiction of what it feels to lose someone. So उसमें 400 पेज इसके बारे में the एक empty feeling you have in your pit. स्टमक में जब when someone leaves you. तो आप जो खाली फील करते हो. And she would go in this like fetal position. Yeah. To hug herself. Yeah. And to be like to protect herself. New Moon तो पढ़ी थी मैंने. Twilight. New Moon मैंने नहीं पढ़ी. I'll read that. Maybe it'll be that nostalgic moment for me. Yeah. Do you crave nostalgia? Are you a nostalgic person? Big time. Like every time I see Parle Ji, I'm like, there's so many moments, nostalgic feeling, like things that your parents do, you know, the bond that you have with your teachers in school. खुन्नस भी होती थी किसी से. Yeah. But nostalgic, मतलब there are so many moments वैसे. Can't be explained, it just could be felt. Yeah. I am also very heavy on nostalgia. And mostly जिन लोगों से मिलता हूँ, they are the move on category की हम याद नहीं रखते हैं. मेरे को तो textures, smells, मेरे को तो लगता है पूरा game ही वहाँ पे. Oh God, yeah. I would. It's the songs also. True. Because if someone has recommended me a song then, and if that song plays, I just feel like, hey. Yeah. This song, it has a special place in my heart. Yeah. Like I would remember जब हम as family पहली बार जयपुर से बीकानेर जा रहे हैं, तो अदनान सामी की एक कैसेट खरीदी थी जिसमें मुझको भी तो लिफ्ट करा दे and all those, मतलब उसी के लिए फिर अब dude. Yeah. तेरा चेहरा. Oh my God, अदनान सामी. Lucky Alisa. इनके गाने. Oh God. Yeah. कहो ना प्यारे के गाने यार. Yeah. ना तुम जानो This ना. really मैंने एक बेस्ट बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया करके प्लेलिस्ट बनाई है. Really? Yeah. Wow. And like मैं सब ऐड करता रहता हूँ उसमें. Oh ho ho. Is that song there? Yeah. ये तो है बजता था. पिकनिक पे रेन डांस में हमेशा. उसका ओरिजिनल वर्जन इज द वन आई लाइक. उसके बाद तो बहुत करप्ट. नहीं the original version. फिर तो बहुत करप्ट करने की लोगों ने कोशिश करी है. But that's my thing. I'm trying to not. अभी बहुत ओरिजिनल सॉन्ग्स के रीमेक्स भी बन रहे हैं. So music videos and all. I'm just trying to stay away because OG is the OG. Yeah. I also always do that. So music पे हम आ ही गए, तो
what's your relationship with music? Is it a part of your daily routine? Music is my medicine. Like, for not just my part of my life, but my career, it plays a very important role. And because of music, I have connected with so many artists, not just in India, but outside India. There is this film I did with Rakesh Om Prakash Mehrasa. It's called Tufan. और so मेरी कोशिश रहती है कि एक ऐसा song choose करूँ जो which would define me the character in 4 minutes. So Maverick Sabra करके एक artist है लंदन से, जिनका एक गाना है Her Grace, जो मैं हमेशा सुनती थी. And the lyrics of that song truly defines who Ananya is. So I wrote to him and I told him that, listen, this is the film that I did, and your song really helped me get into the skin of this character. Please watch this film whenever you can. And he did. Wow. And he said, Mrunal, I had no idea when I made this song. I just made it because, I wanted to make a song, and then it would have such a huge impact on you and on your art. It just feels good. Yeah. Yeah. So I look for that एक गाना जो मेरे किरदार को, मेरे कैरेक्टर की पूरी जर्नी 4 मिनट में सम अप कर सके. Wow. But it's a task. I may not find that song. There are times where I find it. There are times where I just don't find it. And then नहीं मिला फिर? Then for every scene I have different moods. Like Sita Ramam मेरे लिए there was a playlist जहाँ पे it was a combination of mostly all either A.R. Rahman songs or Shah Rukh Khan songs. Veer Zara, and that was my reference. So I must mention to you Veer Zara, particularly the music of it also. Like I keep going back to like insanely. In fact, उसकी जो making है, Veer Zara के making की जो like I don't know if you have watched it. आप just Veer Zara making like search करना. तो वो जो मदन मोहन सर की जो ट्यून्स थी, बस वो बज रही है, एंड देन लता मंगेशकर का चालू होता है. यू विल सी लता मंगेशकर मैम एंड यश चोपड़ा जी के इंटरेक्शन. Jamming, yeah. Which is your favorite song from Veer Zara? It's very tough, yaar. It's the entire album. It doesn't have one bad song. I mean, I can't, not bad, but Do Pal Rukha. Yeah. Oh God, it's just. You remember the poetry which comes of like when the movie starts, एक दिन जब तक है जान. नहीं Veer Zara क्यों हवा आज यूं चल रही है. So उसमें जो I don't remember the exact one, but yeah, क्यों हवा. The movie starts the with way that. he says it also. Yeah. The beginning of the film. Yes. I want more Veer Zaras. नहीं मिल मेरे को तो ऐसी फिल्में I don't know. I haven't come across them lately. Which are some of your Hollywood like influences in general in regard to art? Yeah, so Sophie's Choice. That was one film which I watch लगातार बार-बार, क्योंकि Meryl's performance in that film was so vulnerable, so nice that I watched it while I was prepping for Love Sonia. And because I was kept away from movies and I didn't know, मुझे बस Titanic पता थी. I knew Harry Potter because it was such a cult. There was a point where 7th standard में I used to go in Vasant Vihar High School. उसके सामने there was an arcade where we had a video library where we could go and rent a DVD. Nice. So the first film I rented was Frida by Salma Hayek. Salma Hayek featuring in it. मैंने वो film देखी और मैं हिल गई. I was shaken. I was like, what is this film? I told you who I was when you married me. Yes, you did, and I married you anyway. And you promised to be loyal. And then I have another story. And what happened when Love Sonia's poster dropped? So Demi Moore is also in the movie, right? So my director had shared the picture with the poster with Demi Moore, and Demi Moore is friends with Salma Hayek. So she sent the picture of Sonia looking straight into the lens, and it said Love Sonia. And they mentioned that Salma, this girl reminds me of you.
from Frida. And cut to my life went back to that day where I rented that DVD in Vasant Vihar. Frida was the film where I also discovered what a great of an artist she was. Yeah. मतलब शायद अगर मैं वो फिल्म नहीं देखती तो मुझे शायद नहीं पता चलता फ्रीडा कालो कौन थी. Yeah. और आज मेरे घर में there's so many paintings, books, even on my pillow covers I have like Frida Kahlo's. Yeah. And I'm so inspired by her. At that time I had unibrows. And sometimes it's not, it's looked down upon. ये क्या है eyebrows? ये one way. हाँ. ये कब की बात है? During my school days. हाँ. So Would people make fun? They all made fun of me यार. I was bullied. I had boycott. Like ये तो थोड़ा unibrows. traumatic रहा होगा. नहीं, it's fine. Like they all are regretting now. Look at me. Hey, nice, good. It's good. okay. It's fine. Yeah. No, this is very, very cool. Do you take therapy? What's your take on that? Yeah, I do think I take therapy. I think it's important. But problem is लोग जब जिम जाते तभी डाइट करते हैं. या लोगों को लगता है कि जब आप you feel low or you feel sad, that's when you need therapy. No. But also not necessary. Like you need to have either a friend who you can speak to. That one person who will not judge you, and you need to speak your mind also, because what happens is then emotions ke upar it keeps piling up, Right. and then you are so burnt out and then you just can't take it anymore. Yeah. So you need to keep talking to somebody. Same. So I would, And I have this theory कि when you take therapy, you stop using your friends as therapists. लोगों को लगता है कर no, सकते. never do. In fact, हाँ. you should not even be consulting your friend's therapist. Very true. लोग सूडो थेरेपिस्ट के जैसे अपने दोस्तों को यूज करते हैं. मेरे को और सब थेरेपी करने लगे हैं आजकल. नहीं, but it really helps. It helps. You need to have a therapist, but please do not reach out to the same therapist as your friends and family. Because I don't want, like, sometimes it gets biased. However, they try to be professional and all, but why give them a chance? Very true. Very true. And since हम अभी Daniel Radcliffe moment की बात कर रहे थे, you also have a photo with Max Verstappen. Like वो अभी हमारी and Lewis Hamilton. I don't have a photo with him. I have a photo of him, but that got missed somehow. Oh, yeah. हमारी टीम में शेफाली बेटी, she is also a big Max fan. Oh, no way. And he's so sweet, yaar. He's one of the sweetest humans I've ever met. यार Max के fan कब से हो? Like not a long time ago, but I think 2020, I think during COVID is when I started discovering F1, and I used to watch a lot of their shows on Netflix. Drive to Survive. Drive to Survive, and it was really interesting to know about his journey. He's so young, his dad's contribution towards his career. And I also had a friend who was big time F1 fan. I was like, "Dekh kya raha hai yaar? Main bhi to dekhu." And that's like, wow. And I got an opportunity to be there at Abu Dhabi, and I witnessed them. And that mahal, or every lap, the way, and oh my God, have you ever been? Bro, this is like the best thing in the world. I didn't want to leave. My ears were buzzing, and I felt like this is where I belong. This is what I need to do. You won't believe, not many people know, but I just shot an episode with Top Gear, and I did like drag race, and it was amazing. I can drift. My birthday plans is I'm going to Dubai to take professional drifting classes. This is Top Gear. ये कब आ रहा है? Like ये भी आएगा अभी next 1 or 2 months. And I am a big Hamilton fan, so yeah. Lewis Hamilton also. But see, look, I love him because he's been so consistent, and for him, I like the way he's so focused. Yeah. There's something about his personality. Very he always calming. wins. Very calm. He'll not speak much. He'll just win it. Yeah. Was she something to say? I said he has the right PR. Also, that also matters. Yeah. If I may, Max made F1 boring for me because he's always winning.
But listen, that's also pressure, you know. Yeah. Like, you know, when you're winning, ये 8 win 7 win की कोई मतलब कोई याद नहीं रखेगा, but you lose once and people will always remember that. Yeah. But Max is like killing it and how. Yeah. But in my head I was like, Lewis. No, I'm team Max too, but I have this respect for both of them. Like, if you ask me pick one, I won't be able to, because what they do, I won't be able to do that. So I have this another level of respect, and until I got into the car and I drove, I realized how tough it is. They lose so much weight in that one race, you know. They shed like 7 kgs, and so many things are on stake, you know. Yeah. It's just, you know, when I was there and the roads were smelling of the tires, the rubber, it was, oh my God, I'm getting that nostalgia feeling right now. I can't wait to be back. Amazing. I'll move to some of my last questions. Yes. मेरे को आपसे एक product recommendation चाहिए. A thing you purchase for less than 10,000 rupees that you would recommend to people. It can be anything. Oh, it is almond oil. Not really expensive, but it's so good for your skin. I mean, आप सब products एक side रख दो. एक सेकंड, almond oil. वो तो बाल में नहीं लगाते. बालों में, face पे, अच्छा, हर तो जगह. बाल वाला face पे लगा सकते हैं? Yeah, like you see, I don't have any extensions. Oh. Yeah, I mean, I'm telling you, we end up spending so much money on all these products and all, but this is like the best thing. So I'm talking about skin. नहीं, मैं थोड़ा noob question, but like जो Bajaj almond oil है. नहीं, it's this almond oil, like cold press almond oil, like you can just get it anywhere. Got it. Yeah, not a particular brand, but कोई भी 300-400 रुपए की एक उससे भी कम होगा यार. Just some cold press almond oil. Nice. Yeah. So this is the any other like 10,000 से कम की recommendation? If you tell me which this thing. So जैसे ये आपने ऑयल बताया, लोग बहुत कुछ करते हैं, प्लांट्स रेकमेंड करते हैं, शूज रेकमेंड करते हैं. प्लांट्स भी है. Aquatica pitchira करके एक मनी प्लांट है. Oh. I don't know much details about it, but this is what I've been doing. In fact, my grandfather was a farmer, and I love plants, and मैं हमेशा propagate करते रहती हूँ. I keep pruning. So what I do is whenever the root starts coming, I transfer it into a soil, and when it grows nicely, I gift it to my friends. So rather than gifting them something else, so I keep doing all of this. I also buy a lot of seeds, and in fact बहुत सारे salads में हम लोग बाहर से मंगवाते हैं. So what I do is pok choy जो होती है, हम लोग वो काट के फेंक देते हैं. So I just keep the root part, put it into the glass, let the roots come out, and after that transfer it to the soil, and then I have my celery, my pok choy growing in my garden. Yeah. So yeah, छोटे से garden में whatever I can do, Max. Dude, my one observation from this podcast is you are so considerate in regard to giving people things like weed. Yeah, I'm a giver. This is such a nice thing. But कुछ लोगों को लेना भी नहीं आता. क्या करते हो? प्यार दो, अरे कुछ acknowledge तो करो यार. I'm just like on a fun note, I'm just saying that. Yeah. नहीं, ये होता है. But amazing. And last few questions. Yeah. Any favorite travel destinations, travel recommendations? Recently, I went with my mom and dad. ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. Just go to Lonavala and come back. But it's so beautiful. I can't tell you the road journey. I don't know. I think it was more the company for me. Yeah. Also, there is this mandir called Shani. I don't know if you're spiritual or not, but if you are, there's this place called Shani Shingnapur Maharaj. So, mandir hai. The thing is, there you won't have any doors in that mandir. और in that city, in that at that place, because वो कहते हैं कि यहाँ पे तो चोरी हो ही नहीं सकती. So there were no doors. There are no doors there. Wow. So and it's so spiritual. I don't know why. I like going to temples, Gurudwara. I don't know. It's my thing. I really feel like rooted. I feel like sometimes I've vented out also. So do look for Shani Shingnapur. Go there. It's just beautiful. Something happens. Like when I was shooting in Banaras for Super 30,
that temple I went to, my God. You just get flashes of all the great things and bad things that could have happened to you. But I don't know, it's just beautiful. I know you also use, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ आपने अपने Instagram यूसेज के बारे में बात की थी. I ask people about their social media hygiene a lot. Hygiene? Yeah. What? कि hygiene social media wise कि do you control your social media usage or is it controlling you? कि नहीं आपको पता है कि बस हो गया and phone No, so you should follow this P&D policy. You post and you drop. This is good. So, because then लोग देखते कितने likes मिले, कितने comments आए, कितना क्या हुआ. No, just post it and drop it. Just forget it. हमारा वो S हमें scroll वाला ना remove करना पड़ेगा. The best and the first thing when you wake up in the morning, if you start scrolling, then आपका आधा घंटा गया उसमें. Yeah. And anything, मृणाल मेरे को बहुत मजा आया ये बात करके. Anything that I might not have asked, but आपको बात करनी है, यार हमने ये बात नहीं करी. I think I'm so happy. In fact, बहुत time बाद I've had this conversation. I felt really good. And I'm so happy that through your podcast, you know, I have also discovered and learned about films जो मैंने नहीं देखी है. So please keep recommending me. And I'm going to take, after we are done, I'm going to take that list. So and your number so that you can keep sharing it with me. Done. But thank you for taking me back to my nostalgic moments and those days where I have not visited. Those जो पन्ने होते हैं ना life के जो आप बहुत time अरसे हो जाते हैं where you don't visit. So yeah, thank you. Thank you so much, Mrunal. And before we wrap, अगर आप इस कैमरा में देख के हमारा चैनल चलचित्र टॉक्स लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं. नमस्ते, मैं हूँ मृणाल ठाकुर. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चलचित्र टॉक्स. So guys, मजा आया. I hope you guys liked the episode. अगर आपने ये episode यहाँ तक देखा है, so use the hashtag #sonpari. And guys, मुझे इतनी खुशी होती है to see that you guys actually comment with the hashtags that we ask you to put. So yes, इस बार भी hashtag #sonpari comments में लिखिए, and I'll be back with another episode of Audible presents The Longest Interview.